Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on this channel. Guys, I love the World Cup. जैसा World Cup जा रहा है मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. इतने upsets हैं, इतने unpredictable results हैं. I miss Premier League football. I miss Arsenal. I remember मैंने अभी जो recent live stream किया था कुछ दिन पहले उसमें somebody had said that I should talk about my favorite Arsenal moments, my favorite Arsenal memories. And I was thinking about them, and one of the memories which always stands out to me, जो मुझे हमेशा याद आती है, is Arsenal versus Barcelona in 2011. That first leg where Arsenal won 2-1 against Barcelona, and that Barcelona had some amazing players. Now उस मैच में काफ़ी memorable moments हैं, especially that Arshavin goal और उसकी जो commentary होती है. But what really stood out to me was the performance of Jack Wilshere. And Jack Wilshere in that midfield against probably one of the best midfields in the world at that time in Barcelona, he delivered an incredible performance. So I thought, let me talk to you about Jack Wilshere, because some of you may have heard the name Jack Wilshere, some of you may not know who Jack Wilshere is and what he means to Arsenal and England, and some of you might be too young to have seen Jack Wilshere actually play for Arsenal. As crazy as that sounds to me, because मैंने Jack Wilshere को आते हुए देखा है. But it's okay. So let me talk to you about Jack Wilshere. Now, Jack Wilshere, first of all, is the reason why you see players like Phil Foden, Jack Grealish, to an extent maybe Raheem Sterling, all these players coming out and playing for their clubs and for England. Now, why do I say that? देखिए, history में जितने भी English players थे historically, उनकी कुछ फिजिकल ट्रेट्स बहुत कॉमन होती थी. दे यूज्ड टू बी टॉल, लंबे होते थे. दे यूज्ड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फिजिकली डोमिनेंट, एंड टेक्निकल एबिलिटी कम होती थी, बट दे वर वेरी पावरफुल. सो राइट, एक बिग बर्ली स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश या इंग्लिश प्लेयर होता था, राइट. और ऐसा नहीं था कि हर प्लेयर थे, बट बहुत रेयर प्लेयर्स थे जिनके पास टेक्निकल एबिलिटीज थी, जैसे पॉल गैस्कॉइन. व्हेन जैक विल्शेयर इमर्ज्ड एट अ वेरी वेरी यंग एज, उन्होंने आर्सेनल के लिए डेब्यू 16 ईयर्स की एज पे किया था. इंग्लिश एफए ने देखा दैट वी कैन इन्वेस्ट इन स्लाइटली स्मॉलर एंड लेस स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स फिजिकली, बट दे हैव मोर टेक्निकल एबिलिटीज. एंड एफए ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया इन डेवलपिंग प्लेयर्स विद टेक्निकल एबिलिटीज, और उस सबके पायनियर जैक विल्शेयर थे. नाउ जैक विल्शेयर वाज बोर्न इन 1992. वो एक बॉयहुड वेस्ट हैम फैन थे. उन्होंने आर्सेनल की एकेडमी 9 ईयर्स की एज पे ज्वाइन की थी इन 2001, एंड 2001 वाज अ ग्रेट टाइम टू ज्वाइन आर्सेनल्स एकेडमी, बिकॉज आर्सेनल का गोल्डन पीरियड उस टाइम स्टार्ट हो रहा था. यू नो, यू हैड प्लेयर्स लाइक वियरा, ऑनरी, एंड आई थिंक उसके 2 साल बाद या 3 साल बाद हमारा इनविंसिबल सीजन होना था. सो एज अ यंगस्टर यू हैड a lot of big players to look up to. As the years went by, Jack really impressed everyone at the Arsenal academy, from the coaches to the managers to even Arsene Wenger. And उस टाइम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही थी that Arsenal had moved from Highbury to the Emirates. तो हमारी काफ़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज थी. अगर आप उस टाइम थे तो आपको पता होगा that Arsenal could not compete financially with the likes of Manchester United, with Chelsea. उस टाइम मैन सिटी उतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, ऑयल वाली क्लब, बट काफ़ी सारे बड़े क्लब्स जो थे उनके पास बहुत पैसे थे और आर्सेनल का कोई पैसा नहीं था. So it was a great time to be a youngster at Arsenal, because you had the easiest chance of breakthrough, because Arsenal के पास पैसे नहीं थे, उनको इन्वेस्ट करना ही पड़ा यूथ पे. And that is why players like Wilshere, वॉलकॉट जो हमने साउथहैम्पटन की एकेडमी से लिया, ऑक्सलेड चेम्बरलिन, कीरन गिब्स, ये सारे प्लेयर्स के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था आर्सेनल को रिप्रेजेंट करने का. Jack Wilshere debuted for Arsenal at the age of 16 against Blackburn Rovers in the 2008-2009 season. In the Carabao Cup, ये उस टाइम जो कार्लिंग कप कहा जाता था. 2009-10 सीजन में he was at loan at Bolton Wanderers, जो प्रीमियर लीग टीम थी उस टाइम. And 2010-11 पे he became a regular starter for Arsenal after returning from loan. 2010-11 Wilshere का ब्रेक थ्रू सीजन कहा जाता है, बिकॉज एक ऑफ कोर्स वो रेगुलर स्टार्टर बन गए थे, बट बिकॉज ऑफ दैट बार्सिलोना के अगेंस्ट चैम्पियंस लीग में परफॉर्मेंस जो मैंने पहले जिक्र किया था. इस बार्सिलोना टीम में मेसी, डेविड विया, सर्जियो बुस्केट्स, जावी, इनिएस्टा, डैनी एल्वेज, एरिक एबिडाल, आई थिंक और भी बहुत बहुत बड़े दिग्गज थे, बहुत बड़े पर्सनालिटीज़ थी, बहुत बड़े नेम्स थे.
बट आर्सेनल का सारा अटैक जैक विल्शर के थ्रू आ रहा था। जैक विल्शर सिर्फ एक फिजिकली डोमिनेंट प्लेयर नहीं थे, मतलब ही वॉज अ वेरी फिजिकली इंटेंस प्लेयर। ही वॉज नॉट द टॉलेस्ट ऑन द पिच, बट जो टेक्निकल एबिलिटी थी, एवेडिंग टैकल्स, जंपिंग, पासिंग, कीपिंग द बॉल मूविंग, ये एबिलिटी उस टाइम पे इंग्लिश प्लेयर्स के सामने नहीं दिखती थी एंड बहुत रेयर क्वालिटी थी फॉर एन इंग्लिश प्लेयर टू हैव दैट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस, टू हैव दैट काइंड ऑफ एन एबिलिटी। इनफैक्ट उस गेम के बाद जावी ने खुद ये कहा था आफ्टर आई थिंक इन एन इंटरव्यू वेयर ही सेड यू कैनॉट फॉरगेट अ परफॉर्मेंस लाइक दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड अगर आपको जावी जैसा मिडफील्डर इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो आप सोच सकते हो परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा होगा। बट विल्शर का स्टाइल जितना यूनिक था उतना ही उनके लिए डेट्रीमेंटल था। इंजरीज वर जैक्स बिगेस्ट एनिमीज बिकॉज आफ्टर हिज ब्रेक थ्रू सीजन इन 2011, जब नेक्स्ट सीजन से पहले एमिरेट्स कप हो रहा था, ही स्प्रेन्ड हिज एंकल एंड उसके बाद उस एंकल के स्प्रेन को सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ी एंड आफ्टर दैट सर्जरी ही गॉट अ नी इंजरी। तो सेटबैक आफ्टर सेटबैक होता रहा एंड इन फैक्ट सिंस 2011 till the time he was released from Arsenal, he has never played more than 25 games a season. तो दिखाता है कि जितना टेक्निकली गिफ्टेड जैक विल्शर था उतना ही वो अनलकी था बिल्कुल इंजरीज के साथ। बट ऐसा नहीं है जो सब सोचते हैं कि जैक विल्शर इन इंजरीज की वजह से ही वॉज फिनिश्ड और वट एवर। देखिए, जैक विल्शर की क्वालिटी हमेशा सामने दिख के आती थी वेन एवर ही वॉज फिट फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। He was, of course, an England regular. He was awarded the goal of the season in 2 consecutive years, I think 2013-14 and 14-15. जिसमें 2013-14 में उन्होंने आर्सेनल का one of the best goals ever scored थे, which had a lot of quick passing movements between him, Giroud, Cazorla. वो तो आपको देखना चाहिए अगेंस्ट नॉर्विच जो आर्सेनल का गोल मारा है। आप अगर सर्च करेंगे आर्सेनल गोल वर्सेस नॉर्विच, you will see it's one of the most beautiful goals ever scored. इंग्लैंड के लिए भी जैक विल्शर ने 2 गोल मारे हैं एंड वो 2 गोल आए थे आई थिंक अगेंस्ट स्लोवेनिया। बट डिस्पाइट हिज लैक ऑफ गोल्स वो हमेशा इंग्लैंड के लिए पिविटल रहे थे एंड आई रिमेंबर रीडिंग दैट व्हेन दिस टेक्निकल रेवोल्यूशन जो कहते हैं एफ ए का टेक्निकल रेवोल्यूशन, जब उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था ऐसे टेक्निकल प्लेयर्स पे जिसकी वजह से फिल फोर्डन एंड रहीम स्टर्लिंग एंड जैक ग्रीलिश इमर्ज करके आए हैं, there was an article which said it is not too far-fetched to imagine a technically gifted England team being captained by Jack Wilshere at the 2022 World Cup. और अब देखो मैं 2022 वर्ल्ड कप के ड्यूरिंग जैक विल्शर की बात कर रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है कि जैक was touted as the next big thing in English football and injuries की वजह से उनका करियर कहाँ चला गया। In fact, in his last season at Arsenal, he was loaned to Bournemouth 2016 में। उसके बाद आर्सेनल ने उसको रिलीज़ किया जैक विल्शर को उनाई एमरी के आते ही एंड देन ही वेंट टू वेस्ट हैम फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, बट वहाँ पे भी इंजरीज़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ही वेंट बैक टू बोर्नमथ अगेन जहाँ पे उन्होंने ट्रेन करा एंड थोड़ा सा उनको एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला एंड हिज फाइनल सीजन इन फुटबॉल जैक विल्शर एंडेड अप इन AGF Aarhus इन द डेनिश सुपर लीगा, जहाँ पे उन्होंने आई थिंक 6 months खेला, बट उसके बाद ड्यू टू लैक ऑफ स्टार्ट्स एंड एवरीथिंग ही डिसाइडेड टू रिटायर एट द एज ऑफ 26. एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग, Jack Wilshere made less than 300 senior club appearances for all his clubs combined. That is a very less number for a player who was starting his career at 16 years of age. तो दिख रहा है कि जैक विल्शर का करियर काफ़ी कट डाउन हो गया। 300 club appearances is nothing, especially if you're starting at 16. He's had terrible luck with injury and you can blame anything. You can blame the refs, you can blame maybe improper training methods, you can blame him. Because one of the most common criticisms या फिर reasons that are attributed to Jack Wilshere के injury issues was his playstyle itself. जैसे मैंने कहा, he was a technically gifted player. बट वो फिजिकल भी था। ही नेवर एवर शाइड अवे फ्रॉम टैकल्स, वो हमेशा हार्ड टैकल्स के लिए जाता था एंड जब आप हार्ड टैकल्स करते हो आपकी बॉडी सफ़र करती है। समटाइम्स यू माइट हिट द ऑपोजिट प्लेयर। अगर आपने स्लाइड टैकल करा, आपकी एंकल दूसरे प्लेयर की एंकल से या शिन से टकराएगी। कभी कभी ट्रेनिंग में अगर आप इतने इंटेंसली खेलते हैं तो आपकी बॉडी में काफ़ी वेयर एंड टेयर होता है
एंड अगर आप देखो, he started at 16, his body was still developing, yeah. And maybe itne sare minutes was very detrimental to him. This is why Arsenal fans are very scarred and also scared about the fact कि जब साका इतना खेलता है, जब मार्टिनेली इतना खेलता है, स्मिथ रो को इंजरी होती है, कोई भी आर्सेनल यंगस्टर को इंजरी हो जाती है, Arsenal fans get scared because we remember Jack Wilshere, we remember Eduardo, we remember all these young players who suffered injuries because of their play style or because of the refs or because of the physicality of the Premier League. So it makes you think, what could have Jack Wilshere's career been? I think if Jack never got injured, there was a very legitimate chance he would be captaining England right now. There was a very legitimate chance he would be captain and one of the legends at Arsenal. But yaar, ye to ifs buts hote hain, and sometimes that is football. Thinking about Jack Wilshere makes me really sad because he was a joy to watch. उसका पैशन बहुत इंटेंस था, उसका प्लेइंग स्टाइल बहुत यूनिक था, एंड ही वॉज द फर्स्ट यूथ प्लेयर जिसके पीछे मैं इतना रूट कर रहा था. ऑफ कोर्स अब सबके लिए साका है, अगर आप आर्सेनल फैन है, मार्टिनेली है, स्मिथ रो है, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं आर्सेनल में who you can root for, but Jack was the original one, and he wasn't the original one just for Arsenal, he was the original one for England. Isliye I think Jack Wilshere has had a huge impact not only at Arsenal but also at England, and maybe that impact never came on the pitch all the time, but the fact you had the ability that made an entire football association change its direction for developing players when they saw what is possible and how much talent is possible to grow. तो आपने बहुत बड़ी चीज़ करी है. एंड ऐसा नहीं है कि जैक विल्शेयर का करियर शॉर्ट कट हो गया बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड इट्स ऑल सैड एंड बहुत दुखद कहानी है. देयर इज मे बी अ फेरी टेल कमिंग अप बिकॉज जैक विल्शेयर राइट नाउ इज एट आर्सेनल. ही इज अ कोच, ही इज द अंडररेटिंग कोच. ही इज लर्निंग फ्रॉम मिकेल आर्टेटा एंड जैक एंड मिकेल प्लेड टुगेदर. Maybe Mikel also knows how capable Jack is as a player and he's helping him develop his coaching talent. Who knows, maybe in a few years Jack Wilshere becomes Arsenal's coach. ये सब तो देखने की बात है. But if he does become Arsenal's coach, I think it will be a perfect fairy tale. Anyways, thank you for watching another video on the channel. Come on, you Gunners.